Hello dear all, welcome to TechZone for Gate series program. I hope you are enjoying analog circuits under Gate series program and taking all the benefits. Now we are going to start with the subject electronic devices and circuits, that is popularly known as EDC. This is one of the core subject for electronic students and highly recognized in core electronic job and very much scoring in GATE exam and other competitive exam also. Apart from electronic students, this subject is very useful for other streams also as like electrical, instrumentation, for those who are appearing in other competitive exam as like ESC exam, that is also known as IS exam, ISRO, etc. Apart from this, a part of this subject is very useful for better understanding of the subject analog circuits also. So ultimately I can say that this subject is highly useful, very interesting and scoring. So now we'll talk about the precautions in EDC subject. तो जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन किया है, read the questions carefully and completely along with the data and information given in the questions. सो कई बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के प्रेशर में क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, डेटा को अच्छे से रीड नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चन के हर एक स्टेटमेंट का हर एक वर्ड का मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉमन इमीटर एम्पलीफायर यूज़ करके आप गेन निकाल रहे हैं तो वहाँ पर निगेटिव आता है, लेकिन वहाँ पर अगर मेंशन है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ द गेन तो वहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे केयर करने की ज़रूरत है और वहाँ पर डेटा को भी अच्छे से एनालाइज करने का ज़रूरत है। कई बार एज पर द क्वेश्चन डेटा जितना दिया होता है वो सारा यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर परेशान नहीं होना है। सो ये सब चीज़ों को आप केयर करेंगे इस पॉइंट में। उसके बाद है टेक केयर अबाउट द यूनिट्स कन्वर्सन। सो कई बार वहाँ पे लिखा होता है एज लाइक लेंथ आपको दिया रहेगा माइक्रोमीटर में, लेकिन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर में टू मेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द यूनिट्स अलॉन्ग विद द अदर पैरामीटर्स। तो वहाँ पर भी आपको ये यूनिट कन्वर्सन का केयर करना चाहिए ताकि आपका आंसर सही यूनिट के साथ और सही एक्सपेक्टेशन के साथ एज पर द क्वेश्चन आपका आंसर आए। तो ये सारी चीज़ों का आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे। हमने नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है एक्स्ट्रा केयर इन कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर ईडीसी में या तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू के साथ डील करते हैं, फॉर एग्जांपल 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 15 एंड सो ऑन, या फिर आप बहुत छोटा वैल्यू के साथ डील करते हैं एज लाइक 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -9। तो वहाँ पर कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर जब भी कैलकुलेशन करेंगे ईडीसी में तो बहुत ही सावधानी के साथ वहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे ताकि आपका सही आंसर एज पर द क्वेश्चन आए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिमेंबर सम स्टैंडर्ड वैल्यू एंड यूज़ इट एज पर द रिक्वायरमेंट्स। तो जैसे कि कई बार वहाँ पर मेंशन रहता है थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज वीटी। तो वीटी का वैल्यू अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग जानते हैं वीटी का वैल्यू क्या होता है KT/Q, और यहाँ पर रूम टेम्परेचर में इसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 0.02594। ये कई बार क्वेश्चंस में हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर देखना है क्वेश्चन पेपर में अगर कुछ वैल्यू मेंशन है एज लाइक VT इज इक्वल टू 25 मिलीवोल्ट और 26 मिलीवोल्ट, तो वहाँ पर ये वैल्यू लेना है। अगर नहीं दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इस वैल्यू को ले सकते हैं फॉर द फर्दर कैलकुलेशन ऑफ द क्वेश्चन पार्ट। और इसके अलावा कई बार जैसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज Q हम सब जानते हैं इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो कई बार क्वेश्चन में अगर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद रखेंगे और वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट का प्रिकॉशंस लेंगे ये एग्ज़ाम में, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। तो इसीलिए आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद हम लोग अब आगे देखते हैं इस सीरीज़ के ईडीसी का पहला क्वेश्चन। सो इस सीरीज़ के ईडीसी सब्जेक्ट का अब पहला क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट होने जा रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सीरीज ऑफ द सब्जेक्ट ईडीसी। सो द क्वेश्चन हियर इज लेट अस एज्यूम T इज इक्वल टू 300 डिग्री केल्विन। The silicon based semiconductor is having Nd is equal to 10 to the power 15 per centimeter cube, mu p is equal to 458 centimeter square per volt centimeter,
and tau p is equal to 1 microsecond full stop. The diffusion length in micrometer due to holes is fill in the blanks full stop. So here, as like in the analog, we had seen the serial number as a 1, A2, A3, A4, A5 and so on. So that A was denoting about the analog. Here this E is denoting about that ADC subject. So just आपके information के लिए हमने ये बता दिया है. अब हम लोग देखते हैं next question. So the question here is, in a semiconductor, if EF is positioned at EC, the probability of occurrence of electrons in states at EC plus KT is fill in the blanks, and answer should be up to 3 decimal places full stop. Next. So the question here is, a semiconductor in equilibrium is characterized by the energy band diagram shown in figure is maintained at T is equal to 300 degree Kelvin, Ni is equal to 1 into 10 to the power 10 centimeter raised to minus 3, mu n is equal to 1345 centimeter square per volt second, and mu p is equal to 458 centimeter square per volt second full stop. The equilibrium electron and hole concentrations are option A, N0 is equal to 1 into 10 to the power 15, P0 is equal to 9.34 into 10 to the power 5, option B, N0 is equal to 1 into 10 to the power 13, P0 is equal to 1.0 into 10 to the power 5, option C, N0 is equal to 1.07 into 10 to the power 15, P0 is equal to 9.34 into 10 to the power 4, option D, N0 is equal to 1 into 10 to the power 15, P0 is equal to 1.0 into 10 to the power 5. So these all the values are having the unit of centimeter raised to minus 3, that is also called per centimeter cube, and this is the energy band diagram given here. Now we'll see next. So the question here is, a portion of X varying from 0 to L of a silicon sample uniformly doped with Nd is equal to 10 to the power 15 per centimeter cube of donors is maintained at room temperature, is subject to steady state perturbation such that P is equal to Ni into 1 minus X by L plus Ni square by Nd, where X is varying from 0 to L. Assume electric field E is equal to 0 in the region of x0 to L, dP is equal to 20 centimeter square per second, electronic charge Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and Ni is equal to 1 into 10 to the power 10 centimeter raised to minus 3 full stop. The current density due to holes at x is equal to L by 2 is fill in the blanks into 10 raised to minus 4 ampere per centimeter square full stop. So this is the sample given here. Now we'll see next. So the question here is, which of the following sketches best describe the Dn, that is diffusion coefficient, versus Nd, that is donor concentration, dependence of electrons in silicon at room temperature question mark. So this is the graph given here between Dn versus Nd. So now we'll see next. So the question here is, in an intrinsic semiconductor, the position of Fermi energy level can be controlled by option A, temperature, option B, effective density of states, option C, effective masses of charge carriers, option D, forbidden gap. Now we'll see next. So the question here is, in a non-degenerate germanium sample maintained under equilibrium conditions near room temperature, it is known that Ni is equal to 1 into 10 raised to 13 per centimeter cube and N is equal to 2 into P full stop. The whole concentration at same temperature condition is option A, 1 into 10 to the power 12, option B, 7.07 into 10 to the power 12, option C, 1 into 10 to the power 13, option D, 1.414 into 10 to the power 13, and in all the options units is centimeter raised to minus 3. So by this way, this is the end of the question for the day. All the best.